Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 9 science and here we are starting with the chapter 8, that is force and laws of motion. Very important chapter. If you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel Learn with Nisha ji and stay tuned for regular updates, right? So let us begin with some small examples. जैसे suppose you have a trolley, ठीक है, and you are pushing it like this, तो trolley move करती है. You have been to a supermarket, ऐसा होता है, आप उस पे कुछ force लगाते हो तो वो move करती है, आप उसे push करोगे, ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये टेबल है, इसमें ड्रॉअर होता है, तो आप इसे पुल करते हो टुवर्ड्स आउटसाइड डायरेक्शन, तो ये बाहर आ जाता है, इट इज मूविंग, ठीक है. थर्ड एक एग्जांपल लेते हैं, हॉकी स्टिक. हॉकी स्टिक से अगर आप बॉल को हिट करोगे तो इट विल मूव फॉरवर्ड. ओके, तो बेसिकली पुशिंग, हमने क्या क्या एक्शंस यूज करे, पुश, पुल एंड हिट. इफ वी पुश, पुल और हिट ऑब्जेक्ट्स, इट चेंजेस देयर स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का मीनिंग क्या है, ट्रॉली जैसे पहले रेस्ट पे थी तो अब वो चल पड़ी, इट्स इन मूविंग स्टेट, ठीक है. बॉल की पोजीशन चेंज हो गई, ड्रॉअर की भी पोजीशन चेंज हो गई, लाइक दिस एंड सो ऑन. So these all things start moving because we make a force act on them. ठीक है, हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं. किसी केस में हमने पुश किया है, किसी में पुल किया है और किसी में हिट किया है. So this term force is going to be very important in this chapter, right? Next, let us see some other examples. जैसे ये एक स्प्रिंग है, ये तो नॉर्मल कंडीशन में है. आप इधर से और इधर से इस पे फोर्स अप्लाई करो तो क्या होगा, ये स्प्रिंग एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है. सो द स्प्रिंग इज एक्सपैंडिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, राइट. इसी तरह लेट्स टेक अ स्फेरिकल रबर बॉल. ठीक है, ये बॉल है और आपने इसे यहाँ से इस तरह प्रेस करा, फोर्स अप्लाई करा, और राइट साइड से इस तरह फोर्स अप्लाई करा. So the spherical rubber ball will become oblong as we apply force on it. ठीक है, इसकी shape change हुई, right? So these are all the examples how force affects the objects. So now let's talk about balanced and unbalanced forces. Okay. Now let us take a small example. Suppose you have a block. ठीक है, एक block है, कुछ इसका mass है, heavy block है, let's say. Now अगर हम equal forces से इस ब्लॉक को पुल करें, ठीक है, यहाँ से लाइक समवन इज पुलिंग इट विद सम फोर्स, और यहाँ से सेम फोर्स से यहाँ से भी इस तरह पुल कर रहे हैं, तो क्या होगा, द ब्लॉक विल नॉट मूव. ओके, सो इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स विद इक्वल फोर्सेस, द ब्लॉक विल नॉट मूव. तो सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक है, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए and they do not change the state of rest or of motion of an object. तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मूविंग है तो जैसा मूवमेंट कर रहा है वैसा ही उसका मूवमेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा. किस केस में, जब हमारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं. ठीक है. नाउ अब हम एक और सिचुएशन कंसिडर करते हैं इन विच टू ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स पुल द ब्लॉक. एक साइड वाला फोर्स ज्यादा है, लेट्स से दिस वन इज बिगर और ये वाला छोटा है फोर्स. ठीक है, सो इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, ऑब्वियसली. ठीक है, दोनों बैलेंस नहीं कर पाए फोर्सेस एक दूसरे को. Thus, the two forces are not balanced and the unbalanced force acts in the direction the block moves, right? This suggests that an unbalanced force acting on an object, it brings it in motion. ठीक है, पहले रेस्ट पे था हमारा ये ब्लॉक, तो ये अब मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स, राइट. तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का डिफरेंस क्लियर है, राइट. So we can see if an unbalanced force is applied on an object, then there will be a change in its speed or in the direction of its motion. ठीक है, सो अगर हमें एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, and the change in its speed or in the direction of motion would continue as long as this unbalanced force is applied, right? पर जब आप इस फोर्स को completely रिमूव कर दोगे तो ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इट हैज एक्वायर्ड टिल देन. ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट. Now let's talk about very important law, that is the first law of motion.
Okay, so we will be studying three laws of motions. This is the first one. You have to learn the statement. An object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तो ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक फोर्स अप्लाई करते हो तब ही उसका स्टेट चेंज हो सकता है। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। सो अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखो जिसमें आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सको, ठीक है, तो सम ऑफ द गुड एग्जांपल्स आर लाइक if we consider a motor car taking a sharp turn at a high speed, ठीक है, तो क्या होता है, you are thrown to one side, okay, तो ये basically कैसे होता है, because of this first law of motion, ठीक है। So this is also referred to as the law of inertia, आप इसको law of inertia भी बोल सकते हो, right। Now let us understand the terms inertia and mass. ये बहुत use होंगे आगे. So see, there is a resistance offered by an object to change its state of motion. ठीक है? If it is at rest, it tends to remain at rest. If it is moving, it tends to keep moving. ठीक है? So this property of an object is called its inertia. ठीक है? Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or rest. Right? The mass of an object is a measure of its inertia basically, right? Now let us come on to the second law of motion. It states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. Very important, right? ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, सी चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम लेट्स से इनिशियल मोमेंटम है हमारा p1 और फाइनल मोमेंटम है p2, ठीक है, तो p2 माइनस p1 दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, राइट। p2 किसके इक्वल है, लेट्स से m इंटू v, अगर v फाइनल वेलोसिटी है, p1 क्या होगा m इंटू u, अगर u इनिशियल वेलोसिटी है, m इज द मास, m आप कॉमन ले लो, v माइनस u हो जाएगा, तो रेट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v माइनस u बाय t वी कैन राइट, ठीक है। रेट क्या होता है, अपॉन टाइम। So applied force will be directly proportional to this quantity. Equal करने के लिए हमने constant of proportionality k introduce कर दिया, ठीक है। So k into m और v minus u by t क्या होता है, acceleration, a के equal होता है, तो f is equal to km में, right? k को अगर हम 1 ले लेते हैं तो f is equal to m में हो जाएगा, simple। Next, we come on to the third law of motion. It states that when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, for every action there is an equal and opposite reaction, right? So this is all the theory related to this chapter, right? Now we will be having one more lecture for this, जिसमें हम सारे examples solve करेंगे, सारे numericals, back exercises solve करेंगे और उसके अलावा important points और theoretical questions भी cover करेंगे, right? So after completing this theoretical chapter properly, then you can switch to the second part which contains all the problems, right? So if you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel and stay tuned to Learn with Nisha ji for more updates.